लोकेशन में कुछ अलग चुनौतियों के चलते हुए कुछ राज्यों में कुछ वर्क अभी एलोकेट नहीं हो पाए थे, लेकिन 15 अगस्त तक हर गांव में जो है वर्क एलोकेशन होकर के काम शुरू हो जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सब लोगों ने संकल्प किया। आज मीटिंग में भी हमने इसके बारे में बात की है, क्योंकि पीने का पानी पहुंचाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए राज्यों को ओएनएम पॉलिसी अपनी बनाए, अपने ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म बनाए, ताकि पानी न पहुंचने की दिशा में या किसी तरह का व्यवधान होने की दिशा में उपभोक्ता, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो अपनी शिकायत ठीक से दर्ज करा सके और समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण भी हो सके। मैं एक बार फिर असम को बधाई देना चाहता हूँ कि इसके लिए इन्होंने मंत्री श्री जयंत मल्ला जी के नेतृत्व में जो जल कोष व्यवस्था की स्थापना की। अभी प्रारंभ का समय, अभी उस पर धीरे धीरे लोगों का उसके साथ में जो है एक्लिमेटाइजेशन बढ़ रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये आने वाले समय में एक मॉडल बनने वाला है, जहाँ ग्रीवेंस को जो है रिपोर्टिंग हो, रिपोर्टिंग के बाद तय समय में उसको रिड्रेस करने के लिए भी काम हो। अगर नहीं हो पाता है तो वो नेक्स्ट लेवल पर जो है भी वो रिपोर्ट नीचे जूनियर इंजीनियर से लेकर के मंत्री तक हर एक को उस ग्रीवेंस के बारे में कि उसका डिस्पोजल हुआ है कि नहीं हुआ, उसका एड्रेस हुआ किया गया है कि नहीं, इसके बारे में सब जगह पर मॉनिटरिंग और जानकारी हो। निश्चित ही इस तरह की व्यवस्था से हम आने वाले समय में जो है इसे और अधिक इफेक्टिवली जो है ऑपरेट और मेंटेन कर पाएंगे। आज इस बैठक में एक विषय पर और भी चर्चा हुई थी, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो हिल काउंसिल्स जहां काम करते हैं, वहां कुछ काम की प्रगति को लेकर के कुछ चुनौतियां ऐसी सामने दिखाई देती हैं। हमने आज इस बैठक में ये रिजॉल्व किया है कि उनके साथ हम अलग से बैठ करके एक वार्ता करके एक मीटिंग करके उन चुनौतियों को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ताकि वहाँ भी काम यथेष्ट गति से हो सके और हम समय रहते हुए इस काम को पूरा कर सकें। इसे सुनिश्चित जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित असम के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड टूरिज्म मिनिस्टर मेरे मित्र श्री जयंत मल्ला जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता मिशन के दोनों मिशन डायरेक्टर्स और पत्रकार मित्र, हम सब जानते उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा करके ग्रामीण भारत की आबादी के सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए, उनमें से पेयजल और स्वच्छता दोनों ही एक युगांतरकालीन परिवर्तन लाने वाले विषय है। हम सब जानते हैं 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से ये संकल्प देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया कि हम आने वाले 5 सालों में देश को ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित करें। यूनाइटेड नेशंस ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको परिभाषित करते हुए SDG 2.6 में जो नियत तिथि की थी कि 2030 तक हर एक व्यक्ति को शौचालय मिले, इस तरह की व्यवस्था दुनिया में खड़ी करनी है। भारत जो ओपन डेफिकेशन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर देश था, हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमने 11 साल पहले 2019 में इस स्थिति को, इस स्टेटस को अचीव किया। हमारे देश ने प्रधानमंत्री के श्रीमुख से अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित किया। लेकिन जिस दिन देश महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा था और भारत ने प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से अपने आप को घोषित किया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उस आइकॉनिक स्पीच में कहा कि ये हमारे लिए कोई लक्ष्य नहीं था कि हम देश को खुले में शौच से मुक्त करें, ये एक पायदान मात्र थी, इट वाज जस्ट अ लैंडिंग एंड नाउ वी हैव टू गो टुवर्ड्स कंप्लीट सैनिटेशन इन आवर विलेजेस। हम अपने गांव में संपूर्ण स्वच्छता की तरफ जाएंगे। वहां से यात्रा प्रारंभ करके देश में संपूर्ण स्वच्छता के जो मानक तय किए गए थे कि गांव में
लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। तो मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, फीकल स्लज के वेस्ट के मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, ऑर्गेनिक वेस्ट के मैनेजमेंट की व्यवस्था हो, और इसके अलावा जो काउस डंग है, पशुधन का गोबर है। जी आमार केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डांगरियाय उत्तर पूर्वांचলৰ 8খন ৰাজ্যৰ পুংখানুপুংখভাৱে বিশেষকৈ জল জীৱন মিছন আৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ বা ৰিভিউ লৈছে। আৰু এই ৰিভিউত আমি যোৱা 1 মে দিনাখনো আমাৰ ইয়াত ৰিভিউ হৈছিলে। আৰু 1 মেৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে আমাৰ কি ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছ, কি ধৰণে আমি নতুন নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ বা কিমানখিনি আগবাঢ়িলে বিশদভাৱে ৰিভিউ লোৱা হৈছে। আৰু মই দেখিছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্যই খুব তীব্ৰ গতিত কাম কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়েও এই ক্ষেত্ৰত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে। আমি সকলোৱে লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে 2024 চনৰ ভিতৰত আমাৰ 100% কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে। অসমৰ লক্ষ্যটো আমি ৰাখিছোঁ যে 2024 ভিতৰত যেনেকৈ নহওক আমি ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিম। তাৰ কাৰণে যিবিলাক বাধা অসুবিধা আছে সেইখিনিও কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা ক'ত আমাক সহায় লাগে বা আমি ৰাজ্যত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা আৰু ডেভেলপ কৰিব লগা আছে, এই গোটেইখিনি কথা বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ আলোচনা বিশেষকৈ আমাৰ জল শক্তি মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱত ডাঙৰীয়াই খুব সঘনাই এই ধৰণৰ ৰিভিউ মিটিং বা আমাৰ লগত সঘনাই আমাৰ পৰা গোটেই ৰিপৰ্টবিলাক লৈ থাকে। আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ কামৰ স্পীডো যথেষ্ট বাঢ়িছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো যথেষ্ট সময়ত প্ৰত্যেকখন ডিচি কনফাৰেন্সৰ পৰা আদি কৰি অন্যান্য বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ৰিভিউ লৈ আছে। আনকি কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত মানে প'ৰ পাৰফৰ্মিং কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত কথা পতালৈকে বা আলোচনা কৰালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাম কৰিছে। গতিকে সকলো ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দিশ নিৰ্দেশনাত আমি খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি আমাৰ লক্ষ্যত সুন্দৰভাৱে উপনীত হ'ব পাৰিম বুলি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। অসমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা কৰিছে। ক্ষেত্ৰত এইটোৱে যে অসম এনেকুৱা এখন ৰাজ্য আছিল, যেতিয়া আমি জল জীৱন মিছন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অসম আছিল মাত্ৰ 1%। তাৰমানে গোটেই ৰাজ্যখনত 68 লাখ পৰিয়ালক আমি দিব লগা আছিল। তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ মানে 1% মানুহকে আমি কোনোমতে পানী দি আছিলোঁ বা টেপ যোগে পানী পাইছিলোঁ। আজি 1%ৰ পৰা প্ৰায় 53%লৈকে অহা 3টা বছৰৰ ভিতৰত এইটো বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আছিল। আৰু এনেকুৱা এটা কথা যে 1% সেই একেই অফিচাৰ, একেই ইঞ্জিনিয়াৰ, একেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই মানুহখিনিক লৈ আপুনি স্বাধীনতাৰ 70 বছৰৰ 1% আৰু তাৰ 3 বছৰত আপুনি একেলগে 53%লৈকে অহাটো বহুত চেলেঞ্জ আছিল। কিন্তু আমি এই চেলেঞ্জ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰী, বিষয়া, ইঞ্জিনিয়াৰে গ্ৰহণ কৰিলে, যাৰ কাৰণে আজি আহি আমি 53%লৈ আহিলোঁ। আৰু আমি 53%ৰ ক্ষেত্ৰত সকলো দিশতে আমি মনিটৰিং কৰা ছিষ্টেম ৰাখিছোঁ, যাতে আমাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ দ্বাৰা মনিটৰিং কৰিছোঁ, স্কুল ষ্টুডেণ্টৰ দ্বাৰা মনিটৰিং কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতৰ দিনত কামবিলাক যাতে সুন্দৰভাৱে চলি থাকে তাৰ কাৰণে গ্ৰিভেন্স ৰিড্ৰেচেল ছিষ্টেম এটা ডেভেলপ কৰিছোঁ, যাক আজি গোটেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰেও প্ৰশংসা কৰিছে। আমি জলকোষ নামেৰে এটা নতুন ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰিছোঁ, য'ত QR কোড বেচিছত আমি গোটেই ইনফৰমেশ্যন পাব্লিকৰ হাতত থাকিব। যিকোনো ধৰণৰ গ্ৰিভেন্সেছ, যিকোনো ধৰণৰ কাৰোবাৰ ঘৰত পানী নাই, তেওঁ কোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ সেই অথৰিটিটোলৈকে ইনফৰমেশ্যন হ'ব। তাত হোৱাটছআপ যোগে, মেছেজ যোগে বা মেইল যোগে বিভিন্ন ধৰণৰ ইভিন ভইচ কল যোগেও তেওঁ কমপ্লেইন কৰিব পাৰে। এই ধৰণৰ এটা ডেভেলপ আমি কৰি আনিছোঁ আৰু আগষ্ট মাহৰ পৰা ই পূৰা ফাংচনেল হৈ উঠিব। গতিকে এই ধৰণৰ কিছু কামৰ দ্বাৰা আমি বিচাৰিছোঁ যে 100%ই পানী পোৱা বুলি নহয়, ভৱিষ্যতলৈও অনাগত দিনসমূহত যাতে সদায় পাই থাকিব পাৰে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰিব পাৰে নেকি। জল মিত্ৰসকলৰ কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ। স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ হিচাপে মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ITIsবিলাকত আমি 40 জনৰ বেটছ কৰি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 6000তকৈ অধিক জল মিত্ৰৰ ট্ৰেইনিং হৈ গ'ল। তেওঁলোকক ইউনিফৰ্ম দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক টুল কিট দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কাৰণে কাম কৰা হৈছে। আমাৰ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক কামত লগা হৈছে, মানে পানীৰ কোৱালিটি টেষ্টিঙৰ কাৰণে এটা মানে 5 ওমেন মেম্বাৰ যিকে FTK গ্ৰুপ বুলি কওঁ, সেই গ্ৰুপবিলাকৰ আমি কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ 100% লেবৰেটৰী NABL এগ্ৰিগেটেড লেবৰেটৰী হৈছে। গতিকে পানীৰ কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ। গতিকে আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যি ধৰণৰ এয়াৰমাৰ্কবিলাক আমাক দি গৈছিলে যে এইখিনি কৰি যাব লাগে, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দিশ নিৰ্দেশনা এইখিনি আমি সফলভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।